सर एक लास्ट क्वेश्चन है। मैं Right. सर मतलब मेरे को ये पूछना था कि एज यू ऑलरेडी हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस इनटू इट एंड यू आर क्वाइट फेमिलियर विद व्हाटएवर इज गोइंग इन द इंडस्ट्री, सो जो Right. भी हम कवर करने वाले हैं सर हाँ. सिलेबस के अंदर जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वुड दैट बी सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल इंडस्ट्रियल लेवल सॉर्ट ऑफ थिंग्स? So only the things which are required on the industrial level will be covering for you. राइट सर। There are a lot of things Salesforce में, the administrative side में, there are hundreds of features which I know, जी सर। but in most use cases तो use में ही नहीं आते, लोगों को करना ही नहीं पड़ता यूज, राइट? बट कहीं किसी को जरूरत पड़ता है, इसलिए Salesforce ने फीचर बना रखा है, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड. बट इज दैट समथिंग which is common knowledge which people need to know, which can help you develop? Maybe not, right? So the things which you are covering are the essentials. कि if you work in an industry project, ये तो आएगा ही. You work with a customization project, you will have to write triggers, you will have to make automations, आपको profiles पे काम करना पड़ेगा, validation rules पे काम करना पड़ेगा, right? When you are covering these things, right? How to like service cloud में जाएंगे, approval process is something you will have to work on. So we will only be covering things which are surely required. Okay. Plus there are some things which are good to know. तो उनको भी हम थोड़ा explore करेंगे. Okay. जी सर, थैंक यू। All you guys have to remember that anything essential we will cover some detail of it. Okay, राइट सर। fine. That's good. So I have shared the detailed syllabus in the chat as of now, right? You guys can see my screen, right? यस सर। Yes, sir. Yeah. So I'll just go through via this, then we will move on to the development environment. हम कैसे बनाते हैं, right? So today's session will just be to get you more familiar with what should be the expectation of this technical course. ठीक है? So obviously the first week when we are covering, right? So you guys have to remember the first week from Monday, what we cover, that is the fundamentals. Everything else will be happening on this thing. How does that imply? Let's go through the topic which we'll be covering in first week, which is, if you see here, Salesforce additions, clouds, these details we will go through. But the main thing is how to operate Salesforce. The Salesforce ke lightning experience mein, where you will find what. That is the most important thing you should know. Then the next part is the objects, fields, and records. Within these three words, the whole database of Salesforce is hidden. Any data in Salesforce is either as an object, हर object का क्या बनता है, as a record, and everything has values, right? Subset वो होता है fields. So ये जब हम details में देखेंगे, that is where you understand कि Salesforce का database कैसे काम करता है. You have to remember, when you are controlling data management, when you are controlling security, all that is for what? For the same objects and data, right? जब आप UI पे कुछ बना रहे हो तो UI पे आप बना के दिखाओगे क्या? Same thing. यही डेटा आपको पुल करके दिखाना है, यही डेटा आपको क्वेरी करना है. Your Apex code will also work on the same data. So the most important part is how Salesforce saves data. That will be the primary focus of our first week. Now within that there are subtopics, जैसे कि there are few database structures तो Salesforce खुद से बना के देता है. As I had mentioned you, right? What is a cloud? Salesforce जो clouds देता है, it is like, okay, based on a few business functionality, कुछ functionalities एक साथ group करके as a bundle देगा. Okay, this is a sales cloud, this is a service cloud, this is a marketing cloud, this is an experience cloud, right? Nothing, it's just a group of functionalities. So similarly, group of database भी है कि this type of data is more commonly used by them. So Salesforce does has some ready-made data structure. Those are what are called standard objects. अब खुद से तो उसने दिया, but what you want to do as a developer, you should have an option to customize. आपको खुद से बनाने का तरीका आना चाहिए. So how do we do that? So we can create everything custom also. So that also we'll have to learn, right? Other than that, basic UI का जो experience है, कैसे UI को modify करते हैं, that all we will be covering. So by the end of week 1, our objective will be how to use Salesforce and how data is stored in Salesforce. Is this clear? Anyone, any queries?
सर एक रिक्वेस्ट है। Yes. सर आपका माइक है ना, मतलब समझ आ रहा है बट टेक्स अ लिटिल एफर्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा Okay, माइक। I think there must be some background noise. Give me a second. नो नो सर, नो बैकग्राउंड नॉइस इज देयर। It is just that as if it is very close to your this mouth or some problem issue with the mic, I guess. We can understand everything, but it takes a little effort. Okay, no worries. I think must be some issue with my headphones. I have some alternate headphones. I'll try to set something new up for the next session. आज के लिए please guys bear with me. So I'll try to get this resolved. Uh, right. Sounds good, everyone? Right, sir. Okay, fine, great. So, right. Now, once you get to know how data is stored, so this is for people, as you mentioned, Shahzaman, you were mentioning, right? कि हमारे पास हम कैसे यूज करेंगे सेल्सफोर्स, हमको आईटी का कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं पता. सो देन दैट इज वेयर ऑल दिस थिंग्स कम इनटू द पिक्चर. आप पूरा फंडामेंटल से यू विल गो थ्रू व्हाट इज हैपनिंग इन सेल्सफोर्स. देन फ्रॉम देयर ऑन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग अप. So you have that opportunity of going from scratch. So do not worry about all those things as of now. Now, once we know how data is stored, then there is the next part, which is how to manage the data. And by management, what are the things you do? कि डेटा करेक्ट है कि नहीं, डेटा के बीच में लिंक्स कैसे होते, डेटा का एक्सेस, हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस, हु इज एबल टू सी व्हाट डेटा, right? All of these security concerns, how to control these things, how to build these things, these are the responsibility of a Salesforce administrator. He's an admin, means he's administrating the whole platform. Who can see what, who cannot see what, right? So our week 2 would be based on this data management part. कि चलो डेटाबेस में डेटा तो आ गया, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें. देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स हियर एंड आई टेल यू गाइस, फॉर एक्सपीरियंस्ड रोल्स जब आप अप्लाई कर रहे हो, इन इंटरव्यूज यू विल फाइंड फंडामेंटल से क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, राइट? लेकिन जो बाद के जो टॉपिक्स है जहां के क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इफ योर फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर, you won't be able to create the logic. Okay, so these initial topics are, these two initial categories are something this you guys should be very fluent in. ये आपको पूरा clearly आना चाहिए. You have to put your most effort on understanding everything here. कहीं पे कुछ नहीं आता, कहीं पे अटकते हो, प्लीज आस्क, बिकॉज यहाँ पे इश्यू आया तो बाद के वीक्स में भी इश्यू आता रहेगा. Am I clear, everyone? Yes, sir. Great. Fine. Now, over the next part, now data management, data creation, how to handle the org, ये सब चीजें हमने सीख ली. Now the next part is automations, how to build. Now, as I had told you, there are two ways to build automations. One using code, one without using code. So when we say without using code, what are we doing? Within Salesforce, there are multiple tools जिनको use करके आप automation बना सकते हैं. So our purpose will be to अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेसेस, कैसे वो ऑटोमेशन चलते हैं, हमको नए से बनाना है, हमको कुछ मॉडिफाई करना है. सो वी विल गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स. आउट ऑफ दिस there are few which are, as I have mentioned here, legacy ones, which means the older versions of these, not recommended as of now, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है. But our main focus will be on flow. Okay, how to build flow, what are the types of flow, कैसे कैसे सिनेरियोज में हम फ्लो बना सकते हैं, what are the types of problem जो आप फ्लो से सॉल्व कर सकते हो. These are the things you will have to cover here.
right? Now, after this part, once we have covered the basic functionality of an admin, there is one aspect which is data management and reporting. This is a bit different from the actual data management. यहाँ पे हमारा क्या होता है, अब Salesforce आप यूज तो कर रहे हैं, राइट, बट देन हाउ टू इम्प्रूव इट, कैसे आपको पता चलेगा, राइट, कि आप Salesforce जो यूज कर रहे हो ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, यूजर्स को काम मिल रहा है कि नहीं, फायदा मिल रहा है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड सम काइंड ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि अच्छा क्या प्रोसेस हुई, कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, किस यूजर ने कितना काम किया, राइट। So there is a lot of reporting framework built into Salesforce. So that whole part of reports and dashboards, all those things we will be covering as part of our week 4. Now there is one aspect of a Salesforce admin role, which is they have to take care of data. What does that mean? Manually data create करना, using Excel files से upload करना, right? CSV files से upload करना. So data exporting, importing, this is also a responsibility which normally a Salesforce admin takes care of. This is nothing but as per requirement अपने environment में data load करना, as per requirement environment के बाहर data निकालना, right? So all these things will be covering as part of our week 4. At the end of week 4, we have mostly covered the major parts of Salesforce admin roles. There are few things which I'll leave for now, जो हमारा क्या रहेगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, डेवलपमेंट का पार्ट करेंगे, उसके बीच में we will pull those topics in because वहां पे वो ज्यादा relevant है, आपको और easily clear है. But most of the other parts we'll be covering here. At the end of this week, we will be scheduling the mock interviews for you guys, which will be based on यहाँ तक जो content हुआ, right? After this, when we move on to the development phase of the course, here, as I mentioned, development phase other than admin is just pure coding, right? Now within code, there are subtypes. Apex is your backend. So it will take 2 weeks because वहाँ पे हम we will start from the bare minimum, right? कि क्या क्या data types है, कैसे variable बनाने हैं, and वहाँ से we will start going upward. Classes बनाएंगे, queries करेंगे, data structures पे काम करेंगे, right? Error exception handling cover करेंगे, and then move on to triggers, and then also how what are the best practices for this, right? So over the course of week 5 and week 6, हम लोग focus करेंगे more on Apex because as I've told you, Apex is absolutely necessary for a developer. Okay, this we will cover here. Now week 7 will be completely dedicated to Lightning Web Component. Now आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि एक वीक खाली हमने LWC के लिए क्यों रखा, right? You have to remember, बैकएंड के लिए LWC भी Apex ही यूज करते हैं. Apex we are anyway covering. For front end, Salesforce का UI डेवलपमेंट इज डिफरेंट देन जब आप किसी वेबसाइट के लिए फ्रॉम स्क्रैच HTML बनाते हैं. Why? Because Salesforce provides you ready-made components and documentation for a lot of the UI design. कि आपने अचानक से सोचा अच्छा मेरे को UI के कोलैप्सिबल सेक्शन बनाना है. Salesforce already has that documentation somewhere कि कोलैप्स कैसे बनाना है, right? But you just have to know कि कहाँ पे ढूंढना है. So those parts are simple UI design के. एक्चुअल जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और कैसे एपेक्स को यूज करना है, दैट इज द पार्ट विल बी फोकसिंग. बट वीक 7 विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू LWC. नाउ एट द एंड ऑफ दिस, एज आई मेंशन्ड, देयर आर फ्यू कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स जो हमको वी नीड टू नो. जैसे कि क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवऑप्स. व्हाट डू डेवऑप्स task normally handle? It involves deployment management, moving things from one environment to other thing, right? और ये सब चीजें एज अ एडमिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है. एन एग्जांपल ऑफ दिस इज एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपने बहुत सारा एपेक्स कोड लिखा है.
लेकिन एक्चुअल क्लाइंट के लिए एक दूसरा एनवायरनमेंट होता है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तब आपका कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसे जाए, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, right? These are the kind of configuration you need to know the basics of at least. Similarly, for integration, the idea is the types of integration which is done now. The most prominent is REST API. There is another one जो होता है SOAP API, but that is normally not used because of some limitations it has. So everywhere mostly REST API is the recommended type of integration. So basic API कैसे हम बना सकते हैं Salesforce में, we will also go through that. Right. Now this would be your overall summary of 8 weeks of the content we are going to pursue. उसके बाद जो mock interview होगा, that will be based on this whole syllabus. Now before I move on to the next part, anyone, any query? Hello. Yes. Yeah, so here I'm having a question. If we are done with the admin part, okay, and Okay. now the mock is going on about the admin, but if some student don't clear the admin mock interview, then what will be the scenario? Okay. Okay. Good question. That's a great question. So for this one, I'll tell you this thing, right? So the mid-course mock, right? The only purpose this mock interviews has only one purpose. आपके एक्सपीरियंस के लिए कि अगर इस मोमेंट पे इंटरव्यू होता है आप कैसा परफॉर्म करोगे। ओके, दिस इज नॉट लाइक अच्छा इसके दिस इज नॉट एन एक्चुअल इंटरव्यू कि इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। ओके, आई एम जस्ट कंडक्टिंग दिस मॉक इंटरव्यूज ताकि यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेल्सफोर्स इंटरव्यू। Okay, then based on that, I'll also be giving all of you guys feedback. This part is only for your growth. Okay, it is to identify कौन से part आप you have shown good knowledge, which are the parts जहाँ पे you need more work, आपको थोड़ा और practice करने की जरूरत है, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, right? That is all. Development part will anyway begin. जब mock interview schedule होगा, if you see there are so many people here, right? So anyway, mock interview per person, I'll probably do it in groups. Maybe छोटे छोटे groups में करूँगा, 2 जन के 3 जन के group में. But the purpose is all of you should get dedicated time. So anyway, mock interviews will be like 2-3 दिन तक सबका break कर करके I'll conduct for everyone. But these are Okay, just for your experience, right? Okay, this has no thank other you. purpose. इट्स नॉट लाइक कि आपका एडमिन का मॉक क्लियर नहीं हुआ तो डेवलपमेंट आप नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नॉट है। डेवलपमेंट तो आप सीखेंगे ही, बट आपको पता होना चाहिए एडमिन में आपने कैसे परफॉर्म किया, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, राइट? दैट इज द ओनली पर्पस। सर वन मोर थिंग, आपने बोला कि यूआई में इसमें एलडब्ल्यूसी में पूरा यूआई पार्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट हमें थोरोली सीखनी पड़ेगी, पूरी जावास्क्रिप्ट? नो, अ लॉट ऑफ द एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स आर नॉट इवन एप्लीकेबल, यहाँ पे उनका ओके, जरूरत ही नहीं पड़ता, राइट? द जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स दैट यू विल नीड टू लर्न, आई विल शो यू गाइस। कुछ जैसे सिंटैक्टिकल चेंजेस भी हैं जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के नहीं पार्ट है, दोस आर ओनली स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स में ही चलते हैं वो, तो ओके, वी विल कवर दो। श्योर सर, थैंक यू। Hello. यस, Sir, I just wanted to know what is this low code and no code? And my other question is like it has been regarded as Salesforce is a low code platform, and you're telling the Apex admin and LWC. Not because I'm new to this platform and this is the first day. Also, just wanted to clarify what is the thing. It is based on only fine, for mean low code and no code, or it yeah, is Apex and okay, LWC. Yeah. great, great. So as I told you, right,
So Salesforce is not a, you cannot say as a platform, it is a no-code platform, right? What would be a no-code platform where you can't basically even write code, right? Only that is the scenario where you can say, okay, this is actually genuine no-code platform. So the with Salesforce, the thing is the coding level is more of an approach. Okay, how? As a tool, Salesforce का purpose clear है कि you have to manage your relationship with the customer. Now, what are the types of relationship with the customer you can have? Either आप कुछ बेच रहे हो या किसी ने कुछ भेज लिया है उसको आप सर्विस दे रहे हो, कस्टमर सर्विस देना है आपको, राइट? मे बी आप किसी के साथ कुछ आपको मार्केटिंग करना है, राइट? कोई स्पेसिफिक बिजनेस है जिसके लिए आपको कुछ अलग टाइप ऑफ डेटा चाहिए, राइट? बट एज अ टूल देयर इज अ ओवरऑल एक्सपेक्टेशन एज अ सेल्स फोर्स आप क्या बना सकते हैं. सो विद इन सेल्स फोर्स दैट इज वाई ऑल दोस ऑटोमेशन एक्सेस वो सब चीजें हमको क्यों पता है. 90% of the functionalities will be able to build without coding. Okay, there are a lot of industrial projects जहाँ पे code है ही नहीं. There are also a lot of projects जहाँ पे code है bare minimum, right? But then it becomes a scope of customization. When a client comes and asks for something very specific, कि मेरा ये पेज खुलने पे मेरे को यही 4 चीजें दिखाओ, Salesforce का UI मुझे मत दिखाओ, right? So then what will happen? Then you will have to create your own UI, right? So if need arises, you have the option of coding. Okay, so as a platform, I would say that would be a like more accurate implementation of Salesforce. कि अगर जरूरत है तो आप कोड कर सकते हैं, but most of the things you can do without any code. So it would be as a low code recommendation platform, I would say. Salesforce. Even as a developer, जब आप कोड कर रहे हो, right? There are situations जहाँ पे developers का mindset ये होता है, अच्छा कुछ लिखना है तो इसमें लिख देते हैं, right? ये लिखना है, अच्छा इसमें बना देते हैं, right? But then you will see, जब आप UI LWC में बना रहे हो, there are a lot of types of UI जो आप flow से बना सकते हैं. There is something called a screen flow. As a recommendation, Salesforce also mentions कि अगर आप कोई फंक्शनलिटी आउट ऑफ द बॉक्स टूल्स से पॉइंट एंड क्लिक से बना सकते हो तो आप उसको बनाइए. डू नॉट गो टू कोड. ओनली गो टू कोड when there is no other way of creating what you. Does this answer your question? Yes, yeah, I got it, but still little bit in dilemma because in the LWC, what the syllabus is showing is like HTML, Meta, and JavaScript. I'm not familiar with both. I mean the front-end languages, so No, it is yeah. not. So as I mentioned, right, the scope is very less. I'll tell you guys. So Salesforce का जब कोई यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहा है, right? In Salesforce, they are someone is not expecting कि भाई let's take something like yeah. So let's say someone is not expecting कि आपने Trailhead का ही साइट बना दिया. जब आप LWC में UI बना रहे हैं, मोस्टली इट विल बी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ UI जो करंट Salesforce एक्सपीरियंस में ही कहीं पे आप ऐड करते रहो. ओके, when we are telling HTML, that does not, आप ऐसा मत सोचिए कि पूरा ऐसा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ही बना दिया. यू कैन डू दैट. मोस्टली क्या होगा, इस स्क्रीन में आई वांट सम एडिशनल डेटा. ओके, सो आई क्रिएट इट एज अ LWC कंपोनेंट और वो एग्जिस्टिंग स्क्रीन के बीच में कहीं पे ऐड कर. ओके, इट्स वेरी मॉड्यूलर. So when you are thinking HTML, do not think of all those websites you are creating completely. Right? Think of it as small widgets, small functionalities. So as per need, कहीं पे use करना. Okay, Right, sir. Thanks. right. So don't get worried about this code. Okay, will we be learning more about the main sales cloud, service cloud? Yeah, sales cloud, service cloud, you guys will be learning. Marketing cloud, you guys will not be learning. Marketing cloud is a license-based cloud. Even you can't get a free environment of marketing cloud.
ओके, मार्केटिंग क्लाउड का सिंगल एनवायरनमेंट के लिए भी आपको पैसे देके लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट? सो वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट. ओके, वी नीड एन एंटरप्राइज लाइसेंस फॉर मार्केटिंग क्लाउड. Okay, And one more thing, sir, com- I have one more question, if you don't mind. yeah, just It one is second. I'm answering this one. Let me answer the chat one. They have messaged a while back, I see. So what does this say when I'm taking a look? Okay, I can't comment on what package you will receive, right? That is just based on आपका कौन सा इंटरव्यू क्लियर होता है, राइट? आप जो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं वो जितना पैकेज देंगे आपको उतना ही मिलेगा. बट एज अ ओवरऑल आई वुड से for Salesforce job roles, the packages are comparatively good, competitive or more than competitive in market share. Okay, so no need to worry about that. Yeah, Vasim, you can go with it. and the certification is mandatory, sir. And I just wanted to ask whether how many No, certifications no, we no, need to no, do. no certifications are mandatory. See, there are, I think, around 30, 35 certifications are there. Right, there are a lot of certifications I could have done, but I don't need to. The ones which I wanted to, I did. Okay, And the only those, thing is for people starting or just getting into technology, what certification does is कि आपका जब रेज्यूमे कहीं पे जाता है, राइट, तो पीपल आर लाइक ठीक है, इसका इंटरव्यू लेंगे, इससे हम 10 चीजें पूछेंगे, फिर पता चलेगा उसको 9 चीजें आती हैं. इफ यू ऑलरेडी हैव द सर्टिफिकेशन देन इट्स लाइक ओके, एटलीस्ट सर्टिफिकेशन किया है तो चलो एज्यूम कर लेते हैं 6 चीजें आती हैं. देन दे विल आस्क फॉर ओनली 4. मैंने कहा कहीं पे पढ़ा है कि मुझे तो जेडी में पूछा था, PD1 या कुछ सर्टिफिकेशन है वो मस्ट है, और एडमिन का कुछ नंबर था वो, आई डोंट नो. I just randomly was going through with the JD. No, no, So no. I just wanted to ask. There is no. I'll tell you exactly. Okay. See, people want to push certification, right? The reason for this is जब आप certification के लिए आप पढ़ते हो, there are a lot of things you get to know. Even I push people कि मैंने कल first session I repeatedly said आप parallel certification के लिए prepare कीजिए. Do it. Why? It is a verifiable proof. You just have to say कि I know I am a certified Salesforce administrator, right? Immediately you are eligible for an administrator job, right? I am a certified platform developer, right? That just raises your credibility. हाँ, he is applicable for this job, right? So वो एक credibility जो आता है certifications पे, there is no doubt. Plus आप जब certifications के लिए खुद से पढ़ते हैं, right? And I'll tell you guys, certification करने के बहुत तरीके हैं. Even yesterday we were discussing, right? See, all those things can get you till the interview. लेकिन इंटरव्यू में जाके the preparation is what will actually help. राइट. एंड सर्टिफिकेशंस का एक पर्पस है, नॉर्मली जब भी कोई आप एक ऑब्जेक्टिव या गोल सेट कर लेते हैं ना, तो मेरे को ये तो करना है, अब वो गोल को रीच करने के लिए द एफर्ट यू पुट इन, ज्यादा अच्छे से आप एफर्ट दे पाते हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ सर्टिफिकेशन. ठीक है, चलो एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को बनना है, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या है सिलेबस, चलो वो पढ़ा. ओके, so there is definite benefit to certifications as long as you go through the content, understand everything, learn everything. That will be for lifetime, sir. I mean, just wanted to ask. Yeah, Salesforce certifications don't have expiration date. MuleSoft के certifications में expiration date होता था, but I think वो भी अभी renew होने लगे हैं. The only thing you have to do is कि जब आप कोई certification करते हैं, तो साल में 3 बार Salesforce does upgrade, नई features launch करता है, नए upgrades करता है, right? So just अगर आपके certification के applicable कुछ नया upgrade आया है, तो there is a maintenance का एक batch आता है कि ये just कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या नया है. That's all. But Salesforce certifications don't have an expiry date. Thank you so much. Right. I see someone else. Priya, you have a query? Uh, yes, sir. Actually, my question is, I have 2.5 year career gap. So will it Okay. be I'm able to find the job in Salesforce because I have 2.5 year career gap from 2022 to till now. Yeah, I think for all those like the experience parts and all those things, I think the people at Arbor will be able to help you. But the one thing I would tell for you is, right, see, before this 2-year gap, you were doing something.
right? You must be working with something. Whatever you're doing, you are not doing Salesforce, right? The only objective is अगर आप अभी पढ़ना शुरू करते हैं 2 महीने 3 महीने बाद when you are applying for a Salesforce job, do you have enough knowledge to clear that interview? That is all that is asked. No, a lot of people think ये सब external factors होते हैं, right? I'll tell you guys honestly, like I have taken hundreds of interviews, right? I'll tell you guys honestly. When someone in an interview performs well, right? An interviewer's attitude becomes इसको लेना है job. Okay. Now then they overlook all these things. ये सब चीजें तब मैटर नहीं करते. लोग बोलते हैं कि एचआर को बोलता है भाई sometimes people ask कि एचआर will negotiate कि ये इतना पैकेज मांग रहे हैं मुझे सकते हो. Even interviewer will fight on your behalf. अरे नहीं ले लो, अच्छा परफॉर्म किया है, right? So as long as you perform well in that discussion, in that call, don't worry about these things. Okay? Okay. Does that answer your Yeah. question? Yeah, but will they shortlist my profile because of my career gap or not? Because I am currently Yeah. facing No, that no, no. problem. I would say आप एक बार just do a basic Google search. Because Salesforce is a technology which is easy to get into, right? There are lot of companies, even Indian MNCs, external foreign MNCs, जो उनका program ही ऐसा है कि people who have an experience gap and want to get back into an IT career, right? Okay, Join okay, with us. We will teach you okay, Salesforce. Okay, there are आप just search करना multiple big organizations and company, you will see these kind of projects happening. Okay, so don't worry. okay. Yeah, thank Hello, you. Yes. sir. I have 5 year experience in US healthcare, called KPO, and Okay. I have done simple BSc 2 year back, and I'm eligible for this course. Sorry, I didn't get your query. Are you eligible for this course? See, this course is just about Uh, learning Salesforce, right? अगर आपका plan है कि you want to start looking for a job in Salesforce, then this course is applicable to you. आप इस कोर्स में Salesforce सीख रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स के बाद आप कहीं पे Salesforce रोल में जॉब ले सके, राइट? तो हमें इसका कोई बेनिफिट मिलता है क्या? जैसे हमने यूएस हेल्थ केयर में अभी मैं वर्किंग हूँ एज ए कोडर, तो वो हेल्थ केयर मेडिकल कोडिंग का कुछ होता है ऐसा, हाँ, तो उसका कुछ ऑब्वियसली बेनिफिट पास्ट मिलता है? एक्सपीरियंस, यस, पास्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज वैल्यूड. जब आप रेज्यूमे बना रहे हैं, जब आप लोग रेज्यूमे बनाएंगे, यूज योर पास्ट एक्सपीरियंस टू शो यू नो डोमेन नॉलेज कि आई हैव नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, राइट? आई नो द राइट। टर्मिनोलॉजीज, कैसे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट काम करता है, प्लस आई हैव फास्ट कोडिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम प्रोफिशिएंट इन Salesforce, राइट? दैट जस्ट एड्स टू द पैकेज. थैंक यू सर। Great. Okay, now let me share my screen, and what I'll do is I'll do this for one person. Okay, I'll do this for one person, and then so this is recording. I want all of you guys to also follow the same steps, जिससे आपका खुद का जो ये जो मेरा जैसे एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, राइट, आपका भी एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बन जाएगा. Some people have prior experience with Salesforce. Hopefully they already know this, but still, no worries. Okay. So I want someone who is on their laptop, has access to their email and internet as of now, कि वो अपना screen share कर सके जाके. Anyone wants to nominate themselves? Okay, great, fine. So yeah, we'll go with you then. Let's do this. Right. No need to share screen now because आपको आपका Gmail खोलना पड़ेगा. I don't want your personal email to be displayed. आपका Okay, inbox वगैरह हो, right? Once I tell you, आपके पास एक email आएगा. उस email पे जो link आएगा, उस link को खोलने के बाद आप screen share करो. Okay? ठीक है, ठीक है. Fine. Right. Let's go. So this is the website which all of you guys have to
use. I'll share the website in the chat. इस वेबसाइट पे आप सबको जाना है, यहाँ पे जाके आप अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना सकते हैं, विच इज फ्री. ओके, सो योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल आप डालिए, राइट. व्हाट इज योर ईमेल आईडी? तो श्रेया अपना ईमेल आईडी बताना जरा. हाँ, श्रेया 02 02 .mot@gmail.com. मैं पेस्ट कर देती हूँ चैट में. ओके, दैट्स फाइन. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? ओह सॉरी, नहीं, मेरा स्क्रीन नहीं एक्चुअली दिख रहा है क्या? ओके ओके ओके, नो वरी. आई थॉट माय स्क्रीन इज विजिबल. राइट, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस. यस. Yes sir. Fine, that's good. Okay, let's leave company blank. Okay, fine. Yes sir. Sell. Right. Now ये आपको अपना बेसिक डिटेल डालना है. बेसिकली व्हाट इज नीडेड इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल. बाकी का डेटा वो अपने लिए यूज करते हैं सर. देन जस्ट एग्री टू दिस एंड with all the good. Fine. तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये फ्री एनवायरनमेंट जो बनाते हैं, प्लीज कीप यूजिंग. ठीक है ना? अगर आप किसी, बिकॉज सेल्सफोर्स को फ्री एनवायरनमेंट बनाने में भी कॉस्ट लगता है, तो अगर कोई एनवायरनमेंट है जो 45 डेज तक अनयूज रहता है, वो उस एनवायरनमेंट को डिलीट कर दो. ओके, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जस्ट चेक बॉक्स दिस, साइन मी अप. जस्ट बेसिक डिटेल आप डालिए. नाउ श्रेया, आपको एक ईमेल आया होगा, आप उस हाँ. ईमेल को खोलिए, राइट? जस्ट ओके. ओपन दैट ईमेल, देन कैन यू शेयर योर स्क्रीन. यस. या सो ये जो जॉब टाइटल है, दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, राइट? देयर इज नो, आप उसको कुछ भी वैल्यू डालें, देयर इज नथिंग नीडेड. जॉब टाइटल, कंपनी, ये जस्ट डमी वैल्यूज है. आप टेस्ट डाल दें, नो वन केयर. दिस इज जस्ट योर पर्सनल टेस्टिंग एनवायरनमेंट. रीसेट पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड रीसेट करना है मुझे. हाँ, या आप ईमेल को खोल के स्क्रीन शेयर कीजिए. आई वांट एवरीवन टू सी दैट ईमेल, कि कैसा ओके. ईमेल है. ओके. ओके. इज इट विजिबल? या एवरीवन कैन सी हर स्क्रीन. Yes, yes. राइट, सो यू विल सी, जो हमने Yes, साइन sir. अप किया उसके लिए यहाँ पे एक वेलकम ईमेल आया है कि आपका एनवायरनमेंट अब बन चुका है. बट बिकॉज अभी तक इसमें कोई पासवर्ड सेट नहीं हुआ है, तो आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना होगा. आप नीचे देख लीजिए, यूजर नेम जो है, दैट इज योर लॉग इन यूजर नेम. ये आपको सेव करके ओके. रखना पड़ेगा. ओके, सो ये यूजर नेम देंगे. नाउ कॉपी दिस, सेव इट समवेयर, या एंड या. ओके, आप मेल से बाद में भी चेक कर लेना, नो वरीज. एंड नाउ क्लिक ऑन हाँ. दैट रीसेट पासवर्ड. ओके. Click on that reset password. We click on this, and now you will be setting your own password. Right, and you see this is a complete developer environment. राइट साइड में ऊपर जो थर्ड लास्ट आइकन है सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करिए. राइट, क्लिक ऑन सेटअप. सर्विस फर्स्ट वन, सेटअप. ओके. फर्स्ट सेट. पूरा आपका बैकएंड यहाँ खुल गया. क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर. ऑब्जेक्ट मैनेजर. या. ऊपर लेफ्ट साइड में, यस, राइट. दिस इज हियर. नाउ जस्ट डू वन थिंग, क्रिएट अ न्यू टैब. एक नया टैब खोलिए. नहीं, ऊपर राइट साइड में नया टैब खोलिए ब्राउजर का. हाँ, जो सेल्सफोर्स वाले हैं, इन दोनों को क्लोज कर दीजिए.
ये home How self, should I remove this ribbon? Yeah. yeah. Okay. Now just close this one. Yes. This one अभी जो also? नया वाला, हाँ, this also close it. अभी आपके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है, नाउ इन जस्ट गूगल राइट Yes. login.salesforce.com, login.salesforce.com. यहाँ पे आप अपना वो यूजर नेम पासवर्ड डालिए एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन. No. Click on that. I Okay. don't want to register my phone. Please make Okay. sure all of you guys select on I don't want to register my phone. नहीं तो हर बार वो OTP देके लॉगिन होता है. Okay. Okay. So don't do this for this. Okay. And you see, this is how you access your environment for Suju. Okay. Now, all of you guys have to create an environment like this. हम लोग ऐसे ही environment में सारा हम development करेंगे. When I'm making any configuration, when I'm doing any on the administrative activities, you are supposed to do those too in your environment. And I'll tell you, अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको issues भी नहीं मिलेंगे, आप mistakes भी नहीं करेंगे and फिर वो आपको सीखने का opportunity भी नहीं मिलेगा. Anyone who does not keep doing the hands-on exercises which I provide after every major topic, the only person who will lose from that is themselves. I already know what I'm teaching. Okay, if I don't do hands-on, nothing will happen. अगर 10 जन हैं और 8 जन कर रहे हैं तो उन 8 जन को याद रहेगा, उनको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बाद में मॉक इंटरव्यू में they will be able to answer that thing. And the 2 people who think that okay, I don't need to do the hands-on will end up being the one who at that point of time cannot remember कि profile कैसे बनाते. This I am telling from past experience. Please use this environment. जब आपको कोड का एक्सरसाइजेस दूंगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन का एक्सरसाइज दूंगा, प्लीज आप खुद से कीजिए. एवरीवन. द नॉर्मल थिंग व्हिच विल हैपन इज आई विल गिव यू गाइस अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि वो आपको उस दिन के सीखे कॉन्सेप्ट या उस वीक के सीखे कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है. Then I'll probably give you 1-2 days, and after that I'll also share the scenario, the solution कि आपको पता चले ठीक है कहाँ पे आपने डिफरेंट किया, is there a mistake you made, were you completely correct, right? ये आपको पता होना चाहिए. So you need to compare it with something. But if there are people like okay, since no one is checking, I won't do. That is just their luck. I have seen people take it very lightly. आप पूरा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुनो, उसके जगह आप 15 मिनट में वो चीज खुद से कर लोगे, दैट इज फार मोर बेनिफिशियल. जब तक वो आप एक्टिविटी खुद से करो, राइट? So I want this to be clear to everyone from initial. Please, any exercises or assignments I give, use this environment, do those things by yourself. Only then you will remember them for future. Am I clear to everyone? Yes, sir. Sir, I have logged into the developer that Yes, sir. right now. Hello. Yeah. Yes. जो श्रेया जो पेज पे है मैं वो पेज पे हूँ. मैंने हाँ. लॉगिन किया है, लेकिन अभी सीन क्या जो श्रेया ने जो लॉगिन किया था ना एक और जिस पे मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करना था, हाँ. वो वाला वापस गाइड कर सकते हो क्या? क्योंकि वो चीज नहीं, मुझे वो आप इधर पहली बार लॉगिन करते हो तभी आता है. तो मैंने हाँ. लॉगिन तो किया अच्छा. है. ओके, आपने पासवर्ड सेट किया है, राइट? उसके बाद ये वाला पेज खुल गया है. हाँ, ये वाला पेज है जो अभी श्रेया का स्क्रीन हाँ. है. तो वो वाला करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन अ न्यू टैब, ओके. देन क्लोज दिस वन. तो ये क्योंकि आपने वो लिंक से खोला है इसलिए वो अभी नहीं आया है. ओपन अ न्यू ठीक है टैब, जो क्लोज ओके. दिस वन. अब ब्राउजर में आप लिखिए login.salesforce.com.
Okay. Login. login.salesforce.com. Okay. अब login.salesforce.com पे जाके आप वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देके जब पहली बार लॉगिन करते हैं तब वो आपसे पूछता है कि मोबाइल नंबर दीजिए। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय फोन। ठीक है। Now the username which I have entered my mail ID, that will be a username or something. नहीं, आपके ईमेल में आया होगा यूजर नेम। Okay, that only I was paying. Okay, password reset वाले मेल में, right? हाँ, Just a minute. Your easy to long letter users code. Your username is अच्छा। Okay, yeah, got it. और पासवर्ड जो हमने रखा है वही वाला है। right. Okay? Yeah, I'm trying Fine. it. Okay, मुझे आया है नंबर का। हाँ, उसमें क्लिक कीजिए आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय फोन। Yeah, I have done it. Fine. हाँ, आ गया, सेम पेज पे आ गया। थैंक यू। Fine. Great. Okay. So before I finish off from today, right, I just want you guys to go through ये जो Teams का chat है, you can just copy this whole syllabus from here, right? आप इसको कॉपी करके कहीं पे आपके पास नोट करके रख लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस, राइट? ये जो लिंक मैंने चैट में शेयर किया है, प्लीज यूज दिस लिंक। अपना अपना डेवलपर एनवायरनमेंट आप बना लीजिए। व्हेन वी आर गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स आई वुड वांट कि आपका डेवलपर एनवायरनमेंट पैरेलली खुला हो। जब भी मैं कुछ समझा रहा हूँ आप अपने एनवायरनमेंट में जाके उस चीज को देखें कि अच्छा हाँ दिस इज हियर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो द अंडरस्टैंडिंग as of today's class ending is Monday when we connect, आप सबका डेवलपर एनवायरनमेंट शुड बी रेडी। ओके, आप सब लॉग इन करके रेडी होके यू शुड हैव सीन योर डेवलपर एनवायरनमेंट, आपने यूजर नेम पासवर्ड सेट कर चुके हैं। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज विद इन दोस एनवायरनमेंट। You guys will start doing activity in your own environment. Am I clear to everyone? Yes, sir. Anyone, any queries, any questions? Sir, this account is 45 days free trial, right? No, this account is free for you. लेकिन अगर आप Okay. 45 डेज तक लॉग इन नहीं करते हैं तो वो बंद कर देंगे। अच्छा। Okay, means if we log in daily, then it will not get any नो expire. नो नीड टू लॉग इन डेली। आप सपोज 20 दिन बाद फिर लॉग इन किए, राइट? इट शुड नॉट बी 45 डेज में एक भी बार लॉग इन नहीं। ओके, ठीक। Because already I am as a Atlassian admin only, so that's a taken an interest to learn the Salesforce developer and admin role. Sorry to interrupt you, sir. If yes. you have any query regarding of placement, guys, I already send you my number. Okay. Regarding of placement, you have any doubt or query now? Tomorrow connect me. I will definitely give you the whole answer. Okay. Hello. Hello, your number is Kunal, right? I mean, your name is Kunal, right? Right. Yeah, thanks. प्लेसमेंट रिगार्डिंग जिन्हें भी कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है या जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर पेस्ट कर दिया चैट बॉक्स में, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके ओके गाइस, यस नो? Yes, Kunal. Thank you. Yes. Okay, thank you. Great. Thanks everyone. I hope it was a good session. I'll stop recording this. So I think Kunal, ये जो recordings आपका जो folder में share होता है